A lot of thanks to Chotai Labs for supporting this event. And it's wonderful to learn that we are the first university who is hosting them for this awareness session about medicines or drugs. I know as much as you know Greek. And Malatife, Mada, they are very stupid. Anyway, so the best latifa is when you tell it, hoping that somebody will laugh at it. Nobody laughs at it, then you laugh at yourself. That's the latifa too. Anyway, I don't think I should do that. Chotai Labs, thank you very much for supporting this event, and I hope that this is just the beginning of your end. And students of pharmacy, I hope that you continue to hold such events, especially Dr. Saab, Mukarram Shah Saab, and the rest of the staff member. We need to begin to think out of the box. Universities are undergoing a tremendous change all over the world. The paradigm of learning, the paradigm of support system that universities used to have, the paradigm of lifestyle that universities used to have, these paradigms have begun to change drastically. And we need to understand that. बाकी दुनिया में जिस अंदाज से यूनिवर्सिटी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो यूनिवर्सिटी के अपने लाइफस्टाइल में, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्ट्रक्चर में, कहीं हम उस रेस में भी पीछे ना रह जाएं। ये कुछ बातें हैं जो खैर वक्त के साथ साथ उम्मीद है आप सबको एहसास हो जाएगा। I don't know much about diabetes. I'm not diabetic, luckily, but I've heard that it's not so much a disease as it is a lifestyle. And once it happens, then there is no way that you can get rid of it. I used to read a lot about stem cell research because one of my cousins was a paraplegic because of an accident, car accident. So when I was abroad, we tried to send him abroad. But since at that time the stem cell research was in experimental stages, there wasn't much of a hope. That is when I also learned that stem cell research can cure diabetes. I don't know if it can or if they have continued with that research or they have stopped it. I don't know about that. But disease is something that comes or that is a consequence of my actions. Disease is actually a symptom, a result of what I have been doing for quite some time. Be that use of drug or abuse of drug, that's an action. If I continuously use medicine for a long time, it's going to impact one or another part of my body. And liver perhaps is one of the easily impacted body organ. Because as Dr. Saba was saying, that most of the toxic stuff somehow goes through the liver. I thought it was only kidneys, but I'm sure liver has a lot to do with that too. So I don't know much about diabetes. I don't know much about what cures it, what doesn't cure it. But I know a little bit about stress. And earlier when one of the, I think the mistress of ceremony, you are the mistress of ceremony, when she said that Pakistan has the highest number of diabetics in the world, I'm not surprised. Why? Because on a daily basis it seems as if we need to give our people an overdose of stress. Because if I'm a girl, I'm dealing with one kind of a stress. If I'm a boy, I'm dealing with another kind of a stress. If I live in a rural environment, I'm dealing with one kind of a stress. If I'm living in an urban environment, there is another kind of stress. And then the whole country is in stress too, because Taliban aaye, Taliban gaye, Taliban aaye, Taliban gaye, Taliban kaun hai, Taliban kaun nahi.
इधर बम धमाका हुआ तो उधर बम धमाका हुआ, सुबह बम धमाका, शाम बम धमाका, हमारा है पैगाम बम धमाका, that kind of lifestyle. So life is very, very stressed. And then, who is, raising the prices of things. महंगाई ऊपर गई, महंगाई नीचे आई, महंगाई इधर गई तो महंगाई उधर गई, उसने इस तरह कपड़े पहने, मैंने इस तरह कपड़े पहने, उसने इस तरह कपड़े क्यों पहने हैं, आप उसके साथ क्यों बात कर रहे हैं, आप इस तरह क्यों चलते हैं, आपकी शादी है तो आप म्यूजिक क्यों बजाते हैं, आप फैमिली में मौत हुई है तो आप रोते क्यों हैं। मैंने ये भी सुना है। I'm serious. I did not know कि अगर आपको कोई प्यारा मर जाए तो रोना भी गुनाह है। तो I'm not kidding. Recently एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, दुआ के लिए, तो ये पता चला, तो मैंने उनसे कहा कि खुदा करे आपका कोई, अगर कहूँ भी या ना कहूँ, मरेगा ज़रूर आपकी फैमिली में, तो अगर आपके दिल का टोटा मर जाए तो आप कोशिश करें कि ना रोएं। ये बहुत मुश्किल होगा कि अगर आपको तकलीफ पहुँची है, if you're stressed, if you're traumatized and you have lost somebody, कि जी बंदे को अफसोस होता है, रोना आता है। तो हम तो we are a people who live in stress. हंसना भी हमारा एक खास तरीके से होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा हंसेंगे तो वो बुरा है, आप कम, पता नहीं, I don't know how people live in that kind of an environment. We are more like a pressure cooker, जिसके वो जो vents है ना, जो वो whistling करता है, लगता है कि that's going to get clogged. क्योंकि हमने नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया है। इसके कपड़े इस रंग के हैं तो ये अच्छे हैं, उस रंग के हैं तो ये बुरे हैं, इसके कपड़ों का साइज इस तरह है तो अच्छा है, उस तरह है तो अच्छा नहीं है, इस तरह आप क्यों बोल रहे हैं, उस तरह क्यों नहीं। That's a lot of stress, a lot of stress. And then in addition to that, if you're a student, we seek education not because हम पे फर्ज है, नहीं, हम इल्म इसलिए हासिल नहीं करते कि हम पे फर्ज है, इल्म हम इसलिए हासिल करते हैं कि इसकी वजह से नौकरी मिलेगी। अगर हम इस वजह से हासिल करते कि हम पे फर्ज है तो हम इसमें नकल ना करते। नकल हम इसलिए करते हैं so we can get good grades, we can get good marks. कल सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया था कि recently there was some sort of a test that was conducted for hiring assistant engineers. और वैसे ब्लूटूथ का कोई इस्तेमाल करता है नहीं करता है, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग के लिए कर रहे थे। तो मैंने उस दोस्त से कहा कि नहीं, ये इसमें बैरूनी हाथ है, यह हमारे खिलाफ साजिश है, हम तो ऐसे काम नहीं करते, वो हम ही करते हैं। So stress, there are so many ways, there are so many things that cause stress in our life. कहते हम एक हैं, करते कुछ और हैं। चोरी को हम हराम समझते हैं, इम्तिहान में सबसे ज़्यादा चोरी करते हैं क्योंकि नकल भी चोरी है। सफाई हमारा निसफ ईमान है। ओहो हो, अगर शुक्र है, मैं तो अब्दुल रसूल से कहता हूँ शुक्र है कि निसफ ईमान है, अगर पूरा ईमान हो तो हम तो खलास थे। तो ये भी स्ट्रेस है कि हम लिखते हैं दीवारों पे अहादीस को, उन पे अमल नहीं करते हैं। हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि उतलबल इल्म फरीदतन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, पूरी दुनिया को हम बताते हैं कि मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म का हुसूल फ़र्ज है। लेकिन मेरी वजह से लड़की ज़रा गुजर तो जाए ना, मुर्गी नहीं गुजर सकती हम एक्सरे किए बगैर। सीरियस बात है, अफसोस की बात है। वो इसलिए कि पूरी दुनिया को हम हया का दर्स देते हैं, ये भी स्ट्रेस है। So if I'm a girl, मैं जो इतना अपने आप को मुख्तलिफ पर्दों में लपेट लेती हूँ, इसी वजह से लपेट लेती हूँ कि घर से बाहर निकलूँ तो मजाल है कि कान आराम उनको मिले, क्योंकि हम या सीटियाँ बजाते हैं उस पर, या आवाज़ें कसते हैं, या हम कुछ ना कुछ ज़रूर कहें।
तो स्ट्रेसिस्तान है पाकिस्तान. Serious. We don't laugh. हम बहुत कम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं. सारे बड़े सीरियस और वक्त रहते हैं. पर अगर कोई हंसते बोले खान क्या चल रहा है? You know, it's like, yeah, प्लारवाद देते, you know that, आराम करता हूँ. It's like, आओ प्लारवाद में दे. ज़रूरी है चीज़ बवाद है कि खुशहाल है, खुशहाल है, नूर खबरें निश्चित है. So think about some of these things. So while you prescribe drugs to people, medicine to people for controlling their diabetes, treating their diabetes, you don't cure it, you treat it. So for controlling their diabetes or treating their diabetes, also ask yourself a question, and I should ask myself a question. If I am one of the causes of stress in the life of another person, इस पे सोच लें. दुनिया को इसका दर्स देने वाले कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म का हुसूल फर्ज है, और लड़कियों का स्कूल बम धमाके से उड़ता है, तो मैं खुश होता हूँ क्या पार आंधी गोली का ना कौन, क्यों ना ये भी कह देते हैं घर में क्यों नहीं बैठती. ये भी स्ट्रेस है. मुझे इसकी भी फिक्र है कि कौन घर में बैठे कौन ना बैठे. So I'm not surprised with diabetes, the percentage of population in Pakistan, I think it's 34, not 30. 30.8%. 30.8? अच्छा, okay, maybe wherever I checked it, वहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ हो या मैंने गलत पढ़ा. मेरी उम्र में भी 4 हमेशा 8 आपको नजर आएगा. तो so maybe that's the reason कि हम we don't laugh. हमारी शादियां और जनाजे तकरीबन एक जैसे हो गए हैं. खुश हम नहीं होते. अगर कोई खुश होता है तो हमें इसकी फिक्र होती है क्यों खुश है. म्यूजिक वो अपने घर में बजा रहा है, तकलीफ मुझे मेरे घर में हो रही है. That's also a cause of my stress. कुछ दिन नहीं, कुछ काफी महीने हो गए, पहले पता चला कि सऊदी अरब जहां से ये हमारा जो सब कुछ है हमें वहीं से ही आ रहा. They have opened up so much. कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे. कॉन्सर्ट पता नहीं होता है नहीं होता है. कॉन्सर्ट अच्छा होता है बुरा होता है मुझे पता नहीं है. मुझे अगर पता होता तो मैं उस्ताद ना होता. तो हमने वो भी उसमें भी अपने आप को स्ट्रेस में डाल दिया है कि वो म्यूजिक वो सुन रहा है, तकलीफ मुझे है. तबलीग में वो जा रहा है, तकलीफ मुझे है. हम कब और लोगों के कामों में टांग अड़ाना छोड़ेंगे? ये भी एक स्ट्रेस की वजह है. आप वहां पे बैठे हैं तलाशे वाले रास्ते दस सुखी नहीं सब कहना कर जो ठीक ठाक रास्ते ना दस सुख नहीं की दस से बकेने. Like we hear these things on a daily basis. So thank you faculty of Department of Pharmacy for holding this session. Thank you Chokhtai Labs for supporting such events, and I have a hope that this is not the last time you are here and that you continue to visit our university. We're very new. We're very, very apparently, utterly lacking most of the facilities that we should have. But we mean well, and I have a hope that we will get there too. We're very rural, but we think in a very cosmopolitan manner. We are very rural. We mean to do much better than where we are. Thank you very much, which is why perhaps Chokhtai Labs, as Dr. Saab told, Mukarram Shah Saab, and Dr. Humera? Yes, Humera. You're Humera, right. Dr. Humera said, we are the first university which is holding this kind of an activity. So which means, we mean well. We mean to do things which others have not done so far. So thank you very much. God bless you. और आखिरी बात, अगर कभी हंसी आए
तो दिल खोल के हंसें, हंसना गुनाह नहीं है, यकीन करें। बाय बाय।